डाला, स्पोर्ट्स नहीं थे, आर्ट नहीं था, ये सब करके तो स्कूल के अंदर भी, स्कूल के बाहर भी। और रात को स्कूल क्लास चलाते हो शाम को स्कूल के बाद 4:30 से 6:30 तक। और खाना भी मिलते हैं, क्योंकि उन लोग को खाना घर में वो जो तंदुरुस्त नहीं मिलता है, पौष्टिक खाना, हाँ, तो उन लोग को वो भी मिलता है, और उन लोग की माँ बनाती है, और एकदम हाइजीनिकली। अच्छा, मैं भी वहाँ में गया था, और मैनेजमेंट બધું આપ તમે કરો તમારી સંસ્થા? हाँ, मैनेजमेंट तो खुद ट्रेंड है, इन लोगों को तो, इन लोग इतना होशियार है, एक बार रास्ता बता दो तो खुद सब करता है। तो इन लोगों को सिर्फ एंकरेजमेंट चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए। तो हमारे जो वॉलंटियर्स है, जो हमारे शिक्षक है, तो उन लोग को एकदम प्रोत्साहन देते हैं, तो एकदम एंकरेजमेન્ટ देते हैं। જાહેર સ્વાસ્થ્ય માટે તમે શું કરો છો ત્યાં? શું કર્યું? स्वच्छ से જાહેર સ્વાસ્થ્ય આ જે ટોયલેટ हाँ हाँ, तो एक हमारा અમે જ્યારે આ બધું શોધવા ગયા ત્યારે અમને ખબર પડી કે લોકો બધા બહાર જઈને કરે, અને એને લીધે જે પાણી એનું જે પીવાનું હોય એ બી એનું પેલું ખરાબ થઈ જાય, અને પછી એ બધી હેવી હેબિટ હતી. તો અમે બધાને ક્લાસ લીધા, જરા મા બાપના, પછી વિદ્યાર્થીઓના, ટીચરોને બધાને સમજાવ્યું કે આ સેનિટેશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો હેલ્થ કોઈની નહીં ઠીક હોય તો એને તમને નોકરી કરવા ના જઈ શકો, પછી તમારી આખી હેલ્થ ખરાબ થાય તો બીજા એકને બદલે બીજાને ચેપ થાય ને બધું. તમે સમજાવ્યું કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે ટોયલેટ જગ્યાએ જે વસ્તુ હોય કે તમારે કરેક્ટ જગ્યાએ વાપરવી જોઈએ. એ લોકોએ સમજી લીધું, ને પછી ગવર્મેન્ટ તરફથી થોડી ગ્રાન્ટ મળે છે એ બનાવવા માટે, અને પોતાના પૈસા આ લોકો આપે છે, અને અમે બી થોડા અંદર રોપીએ છીએ. તો અમે એક મોડલ એવી રીતે એક ટોયલેટ બનાવ્યું કે જો આઉટ ટોયલેટ હોય છે, અને તમારે જો વાપરવું હોય ને અંદરથી કરવું હોય તો તમે આ કરી શકો છો, જેથી કરીને પોતે જ એ લોકો શીખે કેવી રીતે આ ટોયલેટ બનાવવું, અને એ લોકો વાપરે. કારણ કે અમે બીજા બધા ગામડામાં જોયું તો આવા ટોયલેટ બનાવે એ તો એનું સ્ટોર રૂમ બનાવી દીધું હતું, કારણ કે એ લોકોને ગિફ્ટ મળેલું, અને એ લોકોને ઈચ્છા જ નહોતી કે અમે આ કરીએ. બસ આ મળી ગયું તો પછી પોતાના દાગીના અને બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય તો આમ મૂકી દે. પછી અમે કહ્યું કે આવી રીતે આપણે કરીશું તો આપણું બી આવું જ થશે. એટલે અમે જુદો રસ્તો લીધો. અમે કહ્યું કે એ લોકોને પાર્ટિસિપેટ કરો, એ લોકોને સમજાવો પહેલાં, અને એ ટ્રેનિંગ કર્યા પછી જો એ લોકોને કરવું હોય તો તમે કરો. એટલે અમારી પ્રેરણા છે કે અમે જ્યારે આ રેઝ ફંડ કરીએ છીએ આના માટે, એક તો એક ટોયલેટનું બી છે, અને એક ટોયલેટના લગભગ મને લાગે છે કે 160 પાઉન્ડ છે જે અમે કોન્ટ્રીબ્યુશન અમે આપવા માંગીએ છીએ, અને એ પ્રમાણે અમારે લગભગ 150 અમારે બનાવવા છે. તો એવી રીતે 8 એવા બીજા પ્રોજેક્ટ છે અમારા શિક્ષણ માટે છે. આના પણ પછી પેલી જે ઈંટ જે પુરાતન કાળનું જે લોકો પાસે છે એવા મજૂર પણ ત્યાં મોજૂદ છે, એની એ બહુ સુંદર અમે ડિસ્કવરી કરી. જ્યારે અમે આ બધા ગામડામાં ગયા ત્યારે અમને ખબર પડી કે એ લોકો એક મોલ્ડ વાપરતા હતા 1000 વર્ષ પહેલા સાઉથ ઇન્ડિયાની અંદર. એ મોલ્ડથી એ લોકો બ્રિક બનાવતા હતા, એની જ માટીથી, અને એનાથી ઘર બનાવતા હતા. અત્યારે 1000 વર્ષ થયા તો એ એક જ મોલ્ડ અમને એવો મળ્યો, પણ હવે એ લોકો ભૂલી ગયા, કારણ કે હવે કોન્ક્રીટ આવી ગયું, ને હવે આ ઈંટો આવી ગઈ, અને સિમેન્ટ આવી ગઈ. તો એક આખું જે એક આપણું હતું જે આપણી સંસ્કૃતિમાં કેવી રીતે બનાવવું એ જતું રહ્યું. તો અમે પછી કેમ્બ્રિજથી એક આર્કિટેક્ટ આપણો જતીનભાઈ છે, એમને આ શોધ કરી, અને એમને આ ખબર પડી કે કેવી પ્રપોર્શનમાં એ માટી કરવાની, અને કેવી રીતે મોલ્ડ કરવાની, અને કેવી રીતે બાળિયા વિના, એટલે બાળો તારે તમારા આખા ઝાડો બધા બળી જાય, એટલે એનાથી બધું નુકસાન થાય. એના વિના કેવી રીતે તમે આ બનાવો જેથી કરીને તમારું આખું ઘર બની શકે. તો અમે એક શરણમ કરીને એક રિસોર્સ સેન્ટર બનાવ્યું છે. અમારા જતીનભાઈએ, અને એક અમારા બહેન છે તૃપ્તિબેન, એ અમારા આર્કિટેક્ટ છે બોમ્બેના, અને એ લોકોએ બિલકુલ ઈંટોને બાળી નથી, અને લગભગ 9-10 મીટર છે, 40 મીટર લાંબુ છે, અને સિમેન્ટ ફક્ત 40 કે 41 કિલો જ વાપરી છે આમાં, અને આખું સ્ટેન્ડઅપ કરે છે કસ્સા વિના. એટલે આ બધું છે ને, અગેન પાછું આપણું પાછળનું જે ઇતિહાસમાં જે શીખેલું છે એ અમે વાપરીએ છીએ, આપણી જ કલ્ચરની વર્નાક્યુલર, આપણે શું કહેવાય વર્નાક્યુલર આર્કિટેક્ચર, એ અમે એ બધું સુંદર કામ ચાલે છે. દર્શક ભાઈ બહેનો, આપણે અહીંયા પૂરો થવાનો ટાઈમ થાય છે, બ્રેક લેવાનો. તો જે આ સર્વમ જે કરી રહ્યું છે એની બહુ સરસ વાત છે. જે તમે 150 એમની પાસે 150 વિદ્યાર્થીઓ એજ્યુકેશન માટે, સ્કોલરશિપ માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે. એક વિદ્યાર્થી દીઠ આપ 160 પાઉન્ડ આપી શકો છો. 400 બાળકો વિદ્યાર્થીઓના ભણતર અને ભોજન માટે તમે એક વિદ્યાર્થી દીઠ 135 પાઉન્ડ આપી શકો છો. 100 સિલેક્ટેડ ગ્રામ્ય સ્ત્રીઓની રોજગારી માટે, જે સ્ત્રીઓ છે બિચારી, એમને ગરીબ છે, એમનું ઘર ચલાવવાનું છે, એવી 100 સ્ત્રીઓ છે સિલેક્ટ કરી છે આ સર્વમે.
એમને તમે 230 પાઉન્ડ આપો તો એમનો જીવન ઉદ્ધાર થઈ શકે એમ છે. 150 ઘરો માટે ટોયલેટ બાંધવાની બહુ જરૂર છે. એના માટે 170 પાઉન્ડ એક ઘર માટે જોઈએ છે, તો આપી શકો છો. 80 વિકલાંગ અને વૃદ્ધ જે જરૂરમંદ છે એની પોતાના કુટુંબનું એનું ભરણ પોષણ કરવાનું છે, એવા જે છે એવા એક વ્યક્તિ દીઠ 600 પાઉન્ડની જરૂર છે, તો એ આપ આપી શકો છો. આ સર્વમને આપ આ સત્કાર્યમાં તમારી પાસે જે કંઈ હોય, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આપવાની જરૂર છે. શિલ્પાબેન પણ એમનો અહીંનો નંબર આપણને કહે છે, તો નોંધી લેશો અને બને એટલી આપ એમાં મદદ કરશો. સર્વમનો એક સ્લોગન છે, એ બહુ સરસ છે કે તમામ ઉંમરના લોકો નાત જાત કે ધર્મના ભેદભાવ વગર હળીમળી પ્રેમથી કામ કરે અને સ્વમાનભેર સ્વનિર્ભર બની ગૌરવશીલ જીવન જીવે. એ એમના ગ્રામ્યનો વિકાસ માટેની આ એક સ્લોગન છે. તો આપ સૌ એમાં હાથ આપજો. તમને જે કંઈ તમારી પાસે હોય થોડુંક આપજો. પ્રભુએ આપણને અહીંયા તો બધું ઘણું આપ્યું છે અને ઘણું બધું આપણને મળી પણ રહે છે, તો કંઈ તમારાથી યથાશક્તિ જે કંઈ અપાય તે આપશો. ગુજરાત સમાચારનો કોન્ટેક્ટ કરજો. તો જો શિલ્પાબેનનો નંબર ના નોંધી શકો તો ગુજરાત સમાચારને પણ તમે આ સર્વમનો ચેક મોકલી શકો છો. શિલ્પાબેન, આપ નંબર કહી દેશો તો. આપણે ટેલિફોન નંબર છે 07404 618 933, એટલે આપણે 07404618933 અને ચેક પેયેબલ ટુ ધ સર્વમ ટ્રસ્ટ આપ જરૂર મોકલી શકો છો. ને આપણું એડ્રેસ છે મિનર્વા હાઉસ, 2627 Hatton Garden, London EC1 N8BR. અથવા ગુજરાત સમાચારને પણ તમે સર્વમ ટ્રસ્ટના નામનો ચેક મોકલી શકો છો. તો અમે આ ભાઈ બે ત્રણેય જે ટ્રસ્ટીઓ છે એમને પહોંચતો કરીશું. આજે હેમા માલિની આજે આવ્યા છે ભારતથી, અને विजयभाई आप न्यूज़ दे दो कि आप हेमा मालिनी जी आपके लिए क्या कर रही है. उन्होंने बहुत खुशी से ये कहा है और ये मान लिया है कि वो सर्वम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी. और खाली यही नहीं कि सर्वम को जितना सहयोग दे सकती हैं, जितना भी कर सकती हैं करेंगी, पर कैसे सर्वम के जिस तरह से गांव में अलग अलग गांवों में भारत में अलग अलग ये जाके फैल सके, एक इस तरह का अप्रोच, उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि पूरा सहयोग देंगी कि जहाँ से अपने कर सकें, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर, हिमाचल पर धीरे धीरे जैसे हो सकता है, उन्होंने कहा उसमें सारा वो सहयोग देंगी. हेमा मालिनी जी ब्रांड एम्बेसडर बन्या છે આ સર્વમ ટ્રસ્ટના. તો આપ સૌ આમાં યથાયોગ દાન આપજો. ફરી મળીશું આવતા ગુરુવારે. અત્યારે આપણે એક બ્રેક લઈ લઈએ, પછી બ્રેક પછી અમારા એડવર્ટાઇઝિંગ મેનેજર અલકાબેન શાહ આવી રહ્યા છે. નમસ્કાર. Do you run your own business? Are you spending too much on your telecoms provider, utilities or your bank? Since we began over 10 years ago, XLN Business Services has been the small business specialist. We now supply over 130,000 small businesses with fixed lines, business broadband, business mobile, PDQ machines and energy. Switching to XLN could save your business thousands of pounds every year. So call now and start saving on 0800 652 8050. Leica Mobile. Leica Mobile's new Pakistan Value Pack gives you 1,000 minutes monthly to Pakistan landlines or mobiles for just £20. To get this brilliant promotion, enter the highlighted code from your Leica Mobile number and press send. You can also choose the brilliant weekly pack and get 200 minutes to Pakistan landlines or mobiles for just £5. To get this brilliant promotion, enter the highlighted code from your Leica Mobile number and press send. For more information or to get your free SIM, visit leicamobile.co.uk. Leica Mobile. Call the world for less. जी बोली जयकारा जयकारा शेरों वाली का, जी बोली जयकारा जयकारा शेरों वाली का, जो बोले वो प्यारा जयकारा शेरों वाली का. माँ करुणा की दाती है, कष्ट
बस में वही, इस घर की रीत कन्यादान करना नहीं, वरदान लेना है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। सोनाली का नेचुरली माँ बनना मुमकिन नहीं। तुझ संग प्रीत लगाई सजना। एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी, जब मैं सांस लेता था तब। जो बात तुम 20 साल में नहीं सोच सके, वैसे आप समझाने से क्या फायदा। बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। अंगद पॉल, वाइस कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम। मैच का इनविटेशन यानी कि हाई फाई पब्लिसिटी, और उसके साथ पब्लिक में जितना दिख सको देखो। લાઈવ પ્રોગ્રામમાં હું ફરીથી આપનું સ્વાગત કરું છું અને આપણે આ બીજા ભાગમાં ખાસ એક મહેમાન આવ્યા છે જે અવારનવાર અહીંયા આપણી સાથે આવી ચૂક્યા છે, પણ આજે આપણે એમની સાથે એમના આ નવા વર્ષમાં જે એક નવું બ્રોશર એ ઓપન કરે છે એના વિશે વાત કરીશું. અનિલભાઈ બાગી, સ્કાયલિંક ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલવાળા અનિલભાઈ, તમારું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ CB લાઈવ શોમાં. અને ખાસ તો અનિલભાઈ જે ભારતમાં આવેલા તીર્થસ્થાનો કે જેને આપણે ધાર્મિક સ્થળો તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેમાં કૈલાસ માનસરોવર એ બહુ મહત્ત્વ ધરાવે છે હિન્દુ માટે, એના વિશે આપણે વાત કરીશું. અનિલભાઈ, તમે આ વર્ષમાં કૈલાસ માનસરોવર વાસેનું જે નવું બ્રોશર અગાઉથી કર્યું છે એના વિશે જરા વાત કરશો અમારા દર્શક મિત્રોને. अलका बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज चांस दिया कि हमारा जो हिंदू पिलग्रिमेज 2013 का जो ब्रोशर है वो हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं. और दर्शक मित्रों, आपको भी नमस्कार. आज हमारा जो 2013 का जो हिंदू पिलग्रिमेज का ब्रोशर है वो मैं आज CB लाइव में लॉन्च करने जा रहा हूं. और अलका बहन और हम आपके जो 2013 की जो यात्राएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. અનિલભાઈ, તમારું બ્રોશર તો મારા દર્શક મિત્રોને બતાવશો. આપણે આજે લોન્ચ કરીએ છીએ અને એમાં જે વિગતો છે એના વિશે પણ થોડી આપણે વાતો કરીશું. દર્શક મિત્રો, અનિલભાઈનું જે આ બ્રોશર છે એ ખૂબ જ હેન્ડી અને ખૂબ જ સરસ છે. તમે એમાં એની બધી જ વિગતો જોઈ શકો છો. હવે અનિલભાઈ, આ બ્રોશરનું આટલું વહેલું આપણે કેમ શા માટે કરીએ છીએ એ જરા જણાવશો કે આ વર્ષે આપણે આ હજી તો 2013નું બ્રોશર છે આ. अलका बहन, ये इसलिए है कि 2013 का ब्रोशर मैंने इस साल ऑलमोस्ट 1 मंथ एडवांस में मैंने जो है वो लॉन्च किया है. नॉर्मली जो है स्काईलिंक ब्रोशर हम लॉन्च करते हैं एवरी ईयर नवरात्रे के ऊपर पिछले 3 साल से, लेकिन इस साल मैंने 2013 का 1 महीना पहले मैंने इसलिए ब्रोशर जो लॉन्च किया है कि लोग जो है वो अपने, जो आपको मालूम है कि नवरात्रि के बाद और नया साल के बाद लोग इंडिया चले जाते हैं, फिर मार्च फरवरी तक जो लोग हैं वो वापस कम आते हैं. तो इसलिए मैंने इस बार ये जो ब्रोशर है इसलिए लॉन्च में अर्ली कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपना प्लानिंग करना है 2013 के लिए कैलाश मानसरोवर के लिए और डिफरेंट यात्राओं के लिए, तो वो अपना प्री प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी छुट्टियां एडवांस में बुक कर सकते हैं, तो उनको पता रहे कि भी कौन सी डेट्स को कौन सी यात्रा जो है वो स्टार्ट हो रही है. બહુ સરસ અનિલભાઈ વાત કરી તમે કે દર્શક મિત્રો આ વખતે તમે એડવાન્સમાં પ્લાન કરી શકો છો અને વધારે તો તમારે યાત્રા વિશેની પૂરી માહિતી પણ તમને અનિલભાઈના ત્યાં મળે. અનિલભાઈ, તમે આ વખતે જે યાત્રા કરાવો છો એના વિશે થોડું કંઈક વધારે માહિતી અને તમારા વિશે બી થોડું કહેશો કે આપણે આમાં કોઈ ખાસિયત શું છે આ યાત્રામાં? देखिए अलका बहन, ऐसा है कि जैसे हम यात्रा करवाते हैं, कैलाश मानसरोवर है, 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 11 ज्योतिर्लिंग है, नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स है, साउथ इंडिया टेम्पल्स है, और फिर हमारी जो स्पेशल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी हम यात्राएं अरेंज करते हैं. जैसे जैन पिलग्रिमेज है या स्वामी नारायण ट्रेल है,
भगवान कृष्ण के हैं। अभी इस साल मैंने जो हमारे जो वैष्णव भाई बंधु हैं उनके लिए मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम जो लॉन्च किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, चंपारण, और जिसमें श्रीनाथ जी और अम्बा जी का जो दर्शन होंगे। तो हम कोशिश करते हैं स्काईलिंक की, जैसे हमारी स्पेशलिटी है पिलग्रिमेज की, कि हम डिफरेंट जो हमारे जो यूके में जो लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हैं, डिफरेंट सेक्ट्स के हैं, हम उनको कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं। अभी हम स्पेशल कुंभ के मेले का भी एक प्रोग्राम जो है लेके आ रहे हैं। मैं एक्चुअली नेक्स्ट वीक स्पेशली कुंभ के लिए अरेंजमेंट के लिए जा रहा हूँ। तो कुंभ का मेला जो है वो एक स्पेशल है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कुंभ मकर संक्रांति के दिन और फिर उसके बाद बसंत पंचमी और मौनी अमावस पे है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करते हैं मई से लेके सितंबर तक, 4 धाम की लेके सेम मई से लेके सितंबर तक, 11 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग वो जो है अपनी श्रावण मास में और फेब्रुआरी में नवंबर में करते हैं। અનિલભાઈ, તમે બહુ સરસ વાત કરી. તમે ઘણા બધા સ્થળોના નામ આપ્યા કે ત્યાંની તમે યાત્રા કરાવો છો, અને એ આપણા ભારતના દરેક તીર્થસ્થાનો, આપણા દર્શક મિત્રો તમે જાણતા હશો કે તીર્થસ્થાનો જે ભારતમાં જે જગ્યા આવેલા છે એ કંઈ બહુ જ પ્રખ્યાત જગ્યા, એટલે તીર્થસ્થાન તરીકે પ્રખ્યાત છે, પણ ત્યાં ફેસિલિટીની રીતે કે બહુ સરસ હોટલો હોય, બહુ સરસ ટ્રાન્સફર હોય એવું નથી. તો અનિલભાઈ, તમે આ બધી યાત્રાઓ અને ખાસ તો કૈલાસ માનસરોવરની જે થોડી ટફ યાત્રા ગણાય છે એનું પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરો છો? दर्शक मित्रों, ऐसा है कि जिन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है उनको वेल इन एडवांस प्लानिंग करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और क्योंकि यात्रा जो है बहुत कठिन यात्रा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, और इसके लिए आपको इन एडवांस अपनी मतलब कि फिजिकल जो है वो ट्रेनिंग करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है कि अलका बहन, इन यात्राओं के लिए जो है वो मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, और आपका विल पावर होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इतनी लंबी यात्रा के लिए जाते हैं, क्योंकि ये यात्राएं जो हैं वो नॉर्मली हमारे जो दर्शक मित्र हैं वो 50-60 की एज के बाद ही वो सोचते हैं ये यात्रा करने के लिए, जब शरीर भी थोड़ा सा वीक होता है, कोई ना कोई जैसे हार्ट का प्रॉब्लम होता है या बीमारी भी होती है, तो काफ़ी लोगों को मुझे इनकार भी करना पड़ता है कि जो लोग हार्ट की ट्रबल है या अस्थमेटिक है उनको हम इस यात्रा के लिए रिकमेंड नहीं करते. અનિલભાઈ, વારંવાર આપણે દર્શક મિત્રોને આગળ પણ જણાવી ચૂક્યા છીએ અને આજે પણ કહીએ છીએ કે 50 વર્ષ થઈ જાવ એની રાહ જોયા વગર યંગ હોય ત્યારે આ યાત્રા કરી લો. 50 વર્ષ પછી તમે બીજી હોલિડે પર જઈ શકશો, પણ કૈલાસ માનસરોવર જેવી જે યાદગાર यात्रा છે એ તો તમે યંગ હોય ત્યારે જ કરી લેવી જોઈએ. बराबर છે? ये सही बात है अलका बहन, आपने बहुत अच्छा कहा कि 50 साल के बाद जब आप 50 इयर्स एज हो जाती है तो आप उसके बाद दूसरे हॉलीडेज कर सकते हो आप, लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो बहुत कठिन हो जाती है आपके लिए. लेकिन फिर भी अगर आप, लेकिन देखिए ये एक एक्सेप्शनल केस भी होते हैं. हमारे साथ कई बार 70 इयर्स ओल्ड लोग भी गए हैं, 73 इयर्स ओल्ड भी गए हैं, जो इवन 50 साल से एज वालों से ज़्यादा फिट होते हैं. एक मैं अपने दर्शक मित्रों को मैसेज देना चाहता हूँ कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अब जो इस साल से जो है वो 65 इयर्स एज जो है वो मैक्सिमम एज लिमिटेशन हुई है तिब्बतन गवर्नमेंट की तरफ से, और ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हम लोग अप टू 75 इयर्स एज लेके जाते हैं. डिपेंड करता है उनको अगर इंश्योरेंस मिलती है. દર્શક મિત્રો, બહુ સરસ વાત કરી અનિલભાઈએ કે આપણે બ્રિટિશરો થોડાક વધારે સ્ટ્રોંગ અને હેલ્ધી છીએ, એનો મતલબ એવો થયો. ગવર્મેન્ટે પણ આપણને એપ્રુવલ આપ્યો છે તો આનો ખાસ લાભ લેજો. ખાસ તો આ પૂર્ણ કરતા કેટલો સમય લાગે છે આ यात्राને? अलका बहन, हमारे पास जो मेन 2 यात्राएं हैं वो है 18 दिन की कैलाश मानसरोवर की, जिसमें पशुपतिनाथ है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, और एक है हमारी यात्रा जिसमें हम लोग मुक्तिनाथ, जनकपुर और मनोकामना टेम्पल जो है वो हम दिखाते हैं. वो 23 दिवस की होती है. तो ये यात्राएं जो होती हैं दोनों मतलब कि अपना जो मुक्तिनाथ वाली है वो 5 दिन पहले लोग जाते हैं, और दूसरी जो कैलाश मानसरोवर की 5 दिन बाद जाते हैं. लेकिन दोनों जो मेन कैलाश की यात्रा दोनों ग्रुप जो है वो इकट्ठा करते हैं.
અનિલભાઈ દર્શક મિત્રોને જરા એ જણાવશો કે જેમને ના ખબર હોય કે મુક્તિનાથ અને કૈલાસ માનસરોવર ક્યાં છે અને એનું મહત્વ શું છે એ જાતે मुक्तिनाथ जो है वो अलका बहन भगवान विष्णु का स्थान है जहाँ पे माता तुलसी से भगवान विष्णु को मुक्ति मिली थी और मुक्तिनाथ पे शालिग्राम रूप में भगवान की पूजा की जाती है और जो हमारे स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए तो बहुत इसका महत्व है क्योंकि भगवान स्वामी नारायण जब अपनी कैलाश की यात्रा के बाद मुक्तिनाथ गए तो वहाँ पे उनकी मूर्ति भी बनी हुई है और वहाँ पे उन्होंने महत्व काफ़ी लोग जाते हैं जो स्वामी नारायण संप्रदाय के हैं। और कैलाश मानसरोवर तो आपको पता ही है कि वो तो एक जिसको हम बोलते हैं कि एंड है या सभी यात्राओं का, वो मतलब कि अपना अल्टीमेट यात्रा है हिंदुइज्म की। जैसे सभी शिव पुराण में और सभी हमारे जो मेन पुराण हैं उनमें मेंशन किया गया है कि भगवान शिव का ये स्थान है। मानसरोवर जो है वो देवी देवता जो है वो वहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं और शिव परिवार जो है वो वहाँ पे वास करता है। तो हमारे गुजराती लोगों में और पंजाबी लोगों में हिंदुइज्म में सबसे अल्टीमेट यात्रा सभी का ये एक जिंदगी का एम होता है कि हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है एक बार जिंदगी में, जैसे मुस्लिम भाइयों के लिए हज होता है ऐसे सिखों के लिए जैसे अपने अमृतसर की यात्रा है, ऐसे ही हमारे लिए जो है वो एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा गिनी गई है। અનિલભાઈ તમે બહુ સરસ વાત કરી, પણ જો કૈલાસ અને માનસરોવરની યાત્રા જ્યારે અહીંથી તો આપણે ફ્લાઇટમાં ઇન્ડિયા જઈએ બરાબર, પણ પછી ત્યાં ગયા પછી જે પરિક્રમા છે એ શું ચાલીને કરવી પડે કે એની શું હોય છે, કેવી રીતે કરવાની હોય છે? अलका जो परिक्रमा ही है जो सबसे कठिन पार्ट है इस यात्रा का और उसमें अपना पोनी अवेलेबल होता है और वहाँ पे ये 3 दिन की परिक्रमा जो है अराउंड 50-52 किलोमीटर की परिक्रमा 3 दिन में कवर की जाती है। और इसमें लोग जो है मोस्टली वो देखिए इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि हर कोई परिक्रमा कर सकता है क्योंकि जब आप लोग इतनी हाइट पे और लोअर ऑक्सीजन लेवल पे आप पहुंचते हो तो आपकी बॉडी का जो एंड्योरेंस लेवल है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। तो इसलिए बहुत कठिन है ये परिक्रमा करना। તો પરિક્રમા પણ મોટા ભાગે તમે જ્યારે ગ્રુપ લઈ જાઓ તો એનો રેશિયો કેટલા લોકો કરી શકે છે? ये डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप में कितने लोग फिट हैं। कई बार जरूरी नहीं है कि यंग लोग हैं जो वो परिक्रमा कर सकते हैं, यंग लोग भी बीमार हो जाते हैं। ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल इम्यून सिस्टम पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है इतनी हाइट के ऊपर, वो उसमें मतलब कि अपना એની હાઈટ કેટલી હોય છે? ये देखिए जो हाईएस्ट पार्ट है इसका कैलाश मानसरोवर का वो 18,500 फीट है और मानसरोवर जो है वो अबाउट 15,500 फीट। આટલા ઉપર ગયા પછી ત્યાં આગળ 3 દિવસ પરિક્રમા કરીએ તો આપણને ત્યાં રહેવાની ને બીજી સગવડો કેવી હોય છે? नहीं देखिए जो परिक्रमा करने के लिए जाते हैं वो उनको टेंट में रहना पड़ता है, टेंट की अकोमोडेशन होती है, साथ में हमारी किचन चलती है और इंडियन शेफ साथ में होता है। तो हम लोग वो थ्रू नेपाल से लेके जब तक यात्रा खत्म करते हैं तो खाना जो है हम कोशिश करते हैं कि अपना इंडियन खाना हम उनको देने की कोशिश करते हैं। અને ભાઈ આ यात्रा આટલી કઠિન હોય છતાં અહીંયાથી જ્યારે જાય અને થોડાક માણસ ગભરાતા પણ હોય યાત્રા પહેલા તમારા એને તમે સપોર્ટ આપો, પણ જ્યારે યાત્રા પૂરી કરી લે ત્યારે એમનો અનુભવ કેવો હોય છે, એમના તમારી સાથેની વાતો કેવી હોય છે? देखिए अलका बहन जब लोग यात्रा करने से पहले हर कोई जो है वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होता है, वो नम भी महसूस करते हैं, तैयारी भी करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि फिजिकली फिट होने से ज़्यादा मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, विल पावर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप इस यात्रा को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और जो यात्री इस यात्रा को करके आते हैं डेफिनेटली उनके लिए ये एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है અને એમના ખૂબ ખુશી પ્રગટ કરે, खूब खुशी प्रकट करते हैं। અનિલભાઈ હવે આપણે આ તો વાત કરી, પણ તમે બીજી બી યાત્રાઓની જે વાત કરી એમાં જરા મને ચારધામ વિશે બી થોડી વિગતવાર અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવશો? अलका बहन चार धाम की जो यात्रा है वो मेन स्टार्ट होती है अक्षय तृतीया के दिन। चार धाम के जो है वो जो दरवाजे हैं वो ओपन होते हैं और जो नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल में 5 या 6 मई को है। तो इसलिए हमारी जो फर्स्ट यात्रा है वो 27 मई को हमने स्टार्ट की है। 17 डेज की यात्रा है
और उसके बाद हमारी एक 21 दिन की यात्रा है जो विद अमृतसर वैष्णो देवी होती है। 27 दिन की यात्रा है जो हम लोग विद कश्मीर एंड अमरनाथ करवाते हैं। अमरनाथ जो है वो सबसे कठिन पार्ट है इस यात्रा का। पॉलिटिकल सिचुएशन भी हो जाती है, वेदर कंडीशन भी हो जाती है, और दूसरा क्या है कि सालों साल जो है ना गवर्नमेंट पहले 60 डेज ये यात्रा करवाती थी, अब इस साल 39 डेज करवाई। तो 39 डेज करवाने के कारण क्या हुआ कि अब 39 डेज में इस साल अबाउट 630,000 लोगों ने उस यात्रा इन दिनों में की है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो लोग प्रेशर बहुत होता है, तो इस बार काफी लोगों को कठिनाइयां आई हैं वहां पे यात्रा के दौरान। तो बरसात भी हो जाती है, लैंडस्लाइड भी हो जाती है, और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन भी हो जाती है कि हेलीकॉप्टर चलता है नहीं चलता, उड़ता है नहीं उड़ता, तो वेदर के कारण या लोकल कंडीशंस के कारण। तो अभी इस साल वैष्णो देवी में भी प्रॉब्लम आई कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले आप वैष्णो देवी का हेलीकॉप्टर जो है वो आप इन एडवांस बुक कर सकते थे ग्रुप्स के लिए, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने इन एडवांस ट्रैवल एजेंट्स को ग्रुप हॉल जो है वो बंद कर दिया। तो ये काफी जो चीजें होती है ना, कई बार इन एडवांस आप इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब यात्रा स्टार्ट होती हैं। तो अमरनाथ की यात्रा जो है, शायद आपको अगर दर्शक मित्रों पता हो कि जो अमरनाथ की यात्रा वो रक्षाबंधन के दिन तक चलती है। नेक्स्ट ईयर रक्षाबंधन 20 अगस्त को है, तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 26 या 27 जून को ये यात्रा या एंड ऑफ जून तक ये स्टार्ट होनी चाहिए, और तब तक फिर हम उस हिसाब से मैंने अपना जो प्रोग्राम है वो जून और जुलाई में अमरनाथ का मैंने डाला है, जुलाई अगस्त में। દર્શક મિત્રો, અનિલભાઈએ જેમ વાત કરી એમ કૈલાસ માનસરોવર અગર તો ચાર ધામની યાત્રા માટે શ્રદ્ધા, મનોબળ અને શક્તિ જરૂરી છે, અને એ હોય તો કે છે ને કે મન હોય તો માળવે જવાય એવું। અનિલભાઈ, આ સિવાયની પણ તમે ઘણી બધી यात्राओं करो છો, એના विषय भी थोड़ा दर्शक मित्रों ने कहो। हाँ, हम दूसरी यात्राएं जैसे मैंने पहले बताया कि 11 ज्योतिर्लिंग करवाते हैं। 11 ज्योतिर्लिंग एक्चुअली स्काईलिंक ही ऐसा था जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इस कंट्री में। 11 ज्योतिर्लिंग मैं करवाता हूँ फरवरी और नवंबर के मंथ में। उसका कारण क्या होता है कि जो लोग यात्रा कर चुके हैं केदारनाथ की, तो वो वेदर अच्छा होता है और बरसात नहीं होती नवंबर में फरवरी में, और फैसिलिटीज थोड़ी सी अच्छी होती हैं, गर्मी कम होती है, तो इसलिए लोगों को एंजॉय ज़्यादा करते हैं उन दिनों में। ये 28 दिन की यात्रा होती है। हम श्रावण मास के मंथ में और मई के मंथ में मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवाता हूँ 34 डेज की, और हमारी नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स हैं, साउथ इंडिया टेम्पल्स हैं, और जैसे मैंने बताया कि ये हमारी अभी जो यात्राएं हैं, हमने स्वामीनारायण ट्रेल, जैन पिलग्रिमेज, सौराष्ट्र दर्शन जो है हम अपने गुजराती भाइयों के लिए करवा रहे हैं, और दूसरा हमने अमरनाथ अकेले जो है 9 डेज का, इस साल 8 दिन का था, मैंने 1 दिन बढ़ाया है। दिल्ली, अमृतसर, वैष्णो देवी एंड अमरनाथ वो हम 12 दिन का करवा रहे हैं। दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, आगरा ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है इस साल, और उसके साथ हम लोग एक 4 स्टार लग्जरी 4 धाम करवाते हैं कि जहां जहां 4 स्टार होटल्स अवेलेबिलिटी है वहां पे हम लोग ये 4 स्टार होटल्स जो है वो 4 धाम में प्रोवाइड करते हैं। યાત્રા વિશે તો બહુ સરસ વાત કરી અનિલભાઈ, પણ જરાક તમારું કોચ હોલિડે અને એર હોલિડે વિશે પણ કહેશો દર્શક મિત્રોને। दर्शक मित्रों, स्काईलिंक स्पेशलाइज करती है हिंदू पिलग्रिमेज में, लेकिन हम लोग कोच हॉलीडेज भी करते हैं ग्रुप वगैरह के लिए और इंडिविजुअल के लिए भी, और टेलर मेड हॉलीडेज भी करते हैं। हमारा जो 2013 का जो हॉलीडे ब्रोशर है वो हम लॉन्च करेंगे रफली अराउंड जनवरी टाइम में, लेकिन अगर कोई ग्रुप हमें जो है कांटेक्ट करना चाहे वो हमें कर सकते हैं। जैसे ये हिंदू पिलग्रिमेज का ब्रोशर जो अब हमने आज लॉन्च कर दिया है, तो जो भी लोग जो ग्रुप हैं, संस्थाएं हैं या कोई मंदिर है, जो भी हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं वो 0208 902 3007 के ऊपर हमें कांटेक्ट करें, और हमारी जो वेबसाइट है www.hindupilgrimage.co.uk के ऊपर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और गुजरात समाचार में हमारी एवरी वीक जो है ऐड वो होती है, तो उसमें मतलब कि अपना आप ये कॉन्टैक्ट्स वहाँ से भी ले सकते हैं। आपके कोई ग्रुप्स हैं स्पेशल या कोई इंडिविजुअल्स हैं, कैलाश मानसरोवर 4 धाम जिसके बारे में भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 0208 902 3007 पे, और कहीं पे भी अलका बहन ये लोग कंट्री में होए मैं इनको मिलके खुश रहूँगा। आप तुम्हारी वेबसाइट पर दर्शक मित्रों ने जणाई देशो। हाँ, हमारी वेबसाइट है
pilgrimage pilgrimage.co.uk और टेलीफोन नंबर जैसे मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ 0208 902 3007। तो जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वो हमें कभी भी कांटेक्ट करें। आप ब्रोशर हमारा लॉन्च हो चुका है और कैलाश मानसरोवर की हमारी जो DVD है, ये हमारा खुद का जो ग्रुप